जो एक एक्सपीरियंस था ना ऑल बॉय स्कूल में, जो एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है, 5,000 बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा बीच में से असेंबली में आवाज़ मार रहा है, सबको पता है कौन है, लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेगा. Hamza, क्या हाल है? ठीक ठाक. Thank you for having me. No, it's a pleasure. As I said, there's a lot that we want to talk about, but I think let's start from the beginning. So, what was growing up like? You're from Islamabad originally. कैसा था इस्लामाबाद में बचपना? Bachpana was amazing in Islamabad. Yeah, It was great. You know, Islamabad is a very quiet, calm, green, peaceful city. Back in the 90s, there were very few people. बहुत कम population थी. Everyone knew everyone. yeah. It's also very close to nature. And yeah, I went to school in Islamabad. I went to university in Islamabad. So it was great growing up. I think one of the great things is also like I've got a few friends from there, and they always talk about, you know, when they were growing up, they would go on the treks and the hiking in the Magla Hills and all of that. So I used to live right at the foothill, Oh, wow. at the foot of those Margala hills. Yeah, So जो एक relationship with nature था, that kind of Yeah. goes back there. yeah, And yes, you know, बहुत calm, बहुत serene, बहुत खूबसूरत शहर था. yeah, Whenever we'd be traveling to other cities like Lahore, Karachi, Peshawar, yeah, which are the other major cities in the country, Pakistan. तो एक constant दिमाग में होता था that, you know, when are we going to get back? really. When Oh. are we going to get back to Islamabad? Because when you're used to that peace and quiet and that, you know, that calm attitude Yeah, of the people and of the city itself, so you kind of crave that after a couple of days. I was going to say it's not just the city, because when I went to Islam, I remember the first time I went, I think must have been in middle school or something, or typically the reason, I mean, just to let you know as well, मतलब the reason a lot of people would go to Islamabad is to जब अपना visa लगवा रहे होते हो ना, हाँ. US, yeah, like because you've got all the embassies there, Right. so you would have to go. Back Yeah. in the day, you couldn't just like, you didn't have centers in other cities, Right, so yeah. तुम्हें जाना पड़ता था, and they used to take interviews as well. So I remember going there for my US visa, and what I noticed is यार यहाँ पे सब 7 बजे बंद हो जाता है, right? लोग ही नहीं नजर आते थे. But on that, I think as an Indian, I would like to know ki what is it like growing up in Lahore, jo Yeah. Ali tum bade ho, versus Islamabad, and what is that difference like? But Hamza, you've seen both cities very closely, right? I think a key difference is the number of trees. Islamabad is definitely more greener. Hmm. Islamabad में बहुत you know, I don't know, it's I can't explain it. बहुत serenity है. There's this very strong sense of community in And the people. a strong sense, a strong smell of hash in the air as well. वो because wild उगती है. हाँ. मेरे घर के बाहर भी लगी हुई है. What do you mean wild lugti hai? Like Indigenous sadak है ना वहाँ पे. Indigenous है हाँ. वहाँ का तो हाँ. yeah, and they don't really cut it off and they Yeah. don't chop it off. तो वो बस लगा हुआ है किसी भी part में. I think that's why the people are so calm. That's the reason. That's actually the reason. इस्लामाबाद की हवा में उसके एक एटमॉस्फेयर में वो सेरेनिटी है, वो एक लेड बैक हैं सारे. लाहौर में ज़्यादा लोग they're you know more concerned about the business, the profits they make. Yeah. It's very fast paced. इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर है लाहौर का. लोग बहुत ज़्यादा हैं. आई थिंक इस्लामाबाद का ये अब तो खैर अब भी इस्लामाबाद में भी बहुत लोग हो गए हैं because of the internal migration within the country, but generally Islamabad has been lesser populated. And you know, we've got those like Lahore, when you're growing up there and you're going to school, you know, you'll go out with your friends at 2 a.m, right? And you'll go eat at 2 a.m. तुम 2-3 बजे रात के बैठ के किसी चाय के ढाबे पे चाय पी रहे हो, and like I don't think you can do that in Islamabad, or maybe now you can, but back in the day, While growing up you couldn't. yeah. अगर आप मेरा ख्याल है रात के 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद निकलते थे तो हाँ. you'd probably
come across a couple of wild boars Yeah. running around in the Yeah. markets. Yeah. Everything would close down. अब थोड़ा culture change हो गया because लोग ज़्यादा आ गए हैं, commercial activity ज़्यादा हो गई है. तो अब significant change आया है इस्लामाबाद में over the past couple of years. But yeah, there was a significant difference in Islamabad and Lahore. हम सो जाते थे 8-9 बजे, अगर नहीं भी सोते थे तो we wouldn't just leave the house after 10. Right. Yeah. As I said, you know, forest के साथ wildlife निकल आती थी because it was kind of built on this right next to a forest. और वो farmland था सारा जहाँ पे इस्लामाबाद बना, and it's a fairly young city. Yeah. I think 60s में Yeah. बनी थी as compared to Lahore, which is like, you know, Lahore is it's hundreds of years one old, of the oldest. 1,000 years Actually, old. in Pakistan, it's the oldest city. Yeah. You did not have a major city in that region at the time of independence. It was the capital of the Mughal Empire as well. Yeah, yeah, and the Sikh Lahore. Empire as well. Yeah. तो वो तो it's very old ना Yeah. उस हिसाब से तो. Yeah. What about because in Lahore, one of my like the fondest memories, and I was talking to someone about this yesterday, is the cultural aspect. So Basant, for example, right? Like I don't know if spring? you know. So spring, Yeah. but Basant is the kite flying festival in Lahore. Oh, huh. We I'm sure also you have it in it. India Yeah, as well. yeah, especially in like the western part of India, like Gujarat mein and other parts you have. And in Punjab, I guess as well. Yeah, we Yeah. have it, and it's the point. It's the advent of the It's the advent of harvesting spring, season. right? Yeah. And Lahore was known for its Basant. तो मेरी जो बचपन की बड़ी fondest memories है ना, वो मेरी छत की हैं, right? Because I remember as a kid when it was Basant in Lahore, you could not see the sky. There was kites everywhere. Oh wow. We don't have that anymore because it's sort of withered away. But I don't think Islamabad would have had anything. Ban भी close होगी to- ना बसंत गवर्नमेंट ने भी बैन कर लेकिन दी. उस टाइम पे भी हमारे बचपन में भी I don't think Islamabad would have उस तरह की. नहीं, हाँ. मेरी भी fondest memories लाहौर की ही हैं बसंत की, बचपन की. तो इस्लामाबाद का ये था कि culturally very weak. Yeah. It's culturally, you know, a very very weak city. It's like more of a melting pot. Yeah. पूरे पाकिस्तान से लोग आके इस्लामाबाद में जो काम करते हैं वो हैं. So there's a lot of diversity in Islamabad. Native Islamabadis नहीं है कोई. I am probably the first generation Islamabadi, or my generation is the first generation Islamabadi because we were born in the city and then we grew up in the city. So, and a little bit of context in that is because it's the seat of the government. It hosts the seat of the government. आपका major decision making सारी इस्लामाबाद में होती है, state level की, which is why a lot of people come here and, you know, they kind of It's mostly government staff, isn't it? government staff है. Yeah. वो you did your undergrad there as well. तो मतलब undergrad के लिए भी तुम किसी exciting जगह नहीं. What a mean thing to say. So undergrad से पहले मेरा जो स्कूल था, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, Yeah. वो एक्साइटिंग था. अच्छा. वो बहुत एक्साइटिंग इसलिए था बिकॉज एट द टाइम इस्लामाबाद में सिर्फ आई थिंक 3-4 ही स्कूल थे, and it was, you know, fairly bigger city. Yeah. And the school I went to was a huge campus. Yeah. Was probably the biggest campus in the country. तो वो बहुत मजे का टाइम था. तो आई थिंक वो आपका जो कोटा होता है of fun, well, I kind of feel, you know, I kind of covered that up in my What high school school. was this? This was Beacon House, Margala Acha. campus. अच्छा. Oh, it was in the hills. It was close to the hills, Okay. not really in the hills, but you know, it was a big school. It was a lot of fun. All boys school था. उसकी up till all boys O levels. school की ना यार ये अलग ही ये एक वो है, एक ग्रुप नस्ल ही है, अलग एक है. नस्ल है all boys school. Right. और अब आके सोचो तो मैं जाना चाहता हूँ बैक इन टाइम, और Yeah. मैं समझना चाहता हूँ कि उस टाइम पे जो हम हरकतें करते थे ऑल बॉय स्कूल में, उसकी क्या सेंस थी. Yeah. Why did we do all of those things? Why would we, you know, पंखे क्यों मोड़े, डेस्क खड़े करके उनका फोर्ट बना के Yeah. क्यों तोड़ा, उसकी क्या सेंस थी, नहीं समझ आई अभी तक. I want to know. Yeah. But yeah, the all boys school experience was wonderful. और वो friendships बड़ी unique होती हैं. बिल्कुल. I've got a few friends who studied in HSN in Lahore. So HSN is like
I don't know what a comparable would be. So it's a colonial era school in Lahore. The Eton of Oh. Pakistan. It's the The Eton of Pakistan. Eton of But Pakistan. India has those schools. I think Doon school is colonial or is Yeah, like you mean जो मतलब British times से they चले set आ it up रहे हैं. for the elite Oh उस yeah, time there पे. are quite a few of Yeah. them. Yeah, and usually they're like residential schools. Like you don't. Exactly. Day So boarding Edison नहीं is होता like that. वहाँ. Edison Okay, is like okay. that. You live on You're a campus. border. There's a Yeah, term yeah, for it. exactly. Border. You're a border. Right? And border or all boys, उनके ना एक अपनी एक दुनिया होती है. उनकी friendships जो है ना, they're very strong. Is what I've realized. I don't know if you had the same. बिल्कुल ऐसा ही है. हैं थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप अभी तक. लेकिन ये कि जो एक एक्सपीरियंस था ना ऑल बॉयज स्कूल में, जो एक सेंस ऑफ यूनिटी होती है, 5,000 बंदा खड़ा हुआ है, एक बंदा बीच में से असेंबली में आवाज मार रहा है, सबको पता है कौन है लेकिन कोई उसका नाम नहीं लेगा. You remind me of like this stand up why Zakir Khan वो ऐसे बोलता है. Resonates so much with what I've been through, and that's I think such a commonality. जो मैं जब वो सुनता हूँ स्टैंड अप जाकिर खान की, मैं कहता हूँ कि यार अक्रॉस द बॉर्डर भी ऐसे ही हैं लौंडे. यही होता है. क्या कहते हैं ये ऑल बॉयज स्कूल वालों की एक महक होती है. दूर से पता चल जाता है ऑल बॉयज वाला. क्योंकि अच्छी बात नहीं है. लेकिन हाँ. No, that's great. But yeah, it was great. The all boys school experience was great. फिर उसके बाद हाई स्कूल जो था वो फिर कंबाइन हो गया था, लेकिन उसका उतना मज़ा नहीं आया. But yeah, university I went to Islamabad. Yeah. There's this university, इसका नाम है NUST, National University of Science and Tech. I did my econ में undergrad मैंने किया था वहाँ से. It was good, not bad. Yeah. But you also studied development later on उधर ही at NUST. हाँ, NUST से ही मैंने development भी पढ़ी थी. NUST it's a university operated by the military. Okay. तो वो ये था कि अंडरग्रेड में उतना जितना हमें टफ कर दिया था ना, उतनी शायद मेरी लर्निंग नहीं हुई एकेडमिक जितना हमें उन्होंने रेजिलिएंट बना दिया था. Like from a discipline point of view. From a mental point of view, from a discipline point of view. अगर आप बिजनेस स्कूल में थे हम, तो आप टाई पहन के नहीं आए तो आपको रोज का 500 रुपए फाइन था. They're running it like a cadet college essentially. They are running it. और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑपरेशन सारे संभाल रहे हैं, they're all retired military people. अच्छा. तो उनका यही होता था कि आप उनके सामने आए हो तो आपने फिर यस सर जाके करना है उनको. तो या लर्निंग बहुत कम हुई आई थिंक, लेकिन एंड आई barely managed to clear my undergrad. मेरा कोई बहुत ज़बरदस्त स्कोर नहीं था. This is when you were doing economics. Economics, yeah, my undergrad. Why did you, मतलब कोई था कि economics पढ़नी है, and then what was the idea behind it? The switch. So econ made sense because मुझे था कि मैंने आगे ज़रा एवेन्यूज ओपन रखनी है. अगर मैं बिजनेस साइड पे चला जाता तो वो बहुत लिमिटेड हो जाता. जस्ट टू सी के आगे मेरी एवेन्यूज ओपन रहे, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन रहे. You know, a lot of people who studied economics, जिनसे मेरी बात होती है, they tell me like you as well. But they tell me the same thing. Economics gives you a much broader sort of exposure, right? It doesn't, वो pigeonhole नहीं कर देती आपको कि बस तुम यही करोगे. मेरा तो ये था कि जैसे like there are few colleges जो ऐसे government colleges and they're very prestigious. So there was the one that I went to, it's called Lady Shri Ram College. था prestigious, it was hard to get through and everything. बट मेरा लिटरली कोई लॉजिक नहीं इकॉन पढ़ने का. एंड ऐसे जब देखा जाए मार्क्स में तो मेरे 12th बोर्ड्स के मार्क्स में इकॉन वाज माय लोएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. मतलब मुझे इंग्लिश में भी उससे ज़्यादा आए थे. एंड स्टिल इट वाज जस्ट सच अ प्रेस्टीज थिंग. दे वर लाइक ओ बेटा आप इकोनॉमिक्स कर रहे हो इस कॉलेज से. मतलब इट वाज दैट एट 18 years old, इट वाज दैट कि आपको वो मिल गया, आप वो कैसे जाने दे सकते हो. It had nothing to do with I had economics में कोई इंटरेस्ट है कि कुछ है, ऐसा वो नहीं है. But it's very interesting कि जब आप छोटे होते हो तो कभी कभी आपके decisions इतने ज़्यादा वो informed नहीं होते हैं. तो that's a very interesting thing. I would argue even when you're grown up, it is very hard to make informed decisions. Technically. Debatable. मुझे एक तो ये था, और दूसरा इकॉन का
I think why I ended up in econ was the lack of career guidance in our schools. Even though it was probably the best school in the city at that time जिसमें मैं गया था, लेकिन career guidance नहीं थी. और जो मैं अब मुझसे जो पूछता है कि मैं econ करूं या ना करूं, मैं उसको ये कहता हूं कि econ is math. अगर आप math में बुरे हो and if you don't know and if you don't like math, then don't go for econ. अरे भाई मुझे जाके रियलाइज हुआ कि भाई ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, ये तो पूरी मैथ है और मैथ मुझसे होती नहीं थी. क्लास 6 से लेके अप टिल माय ए लेवल्स मैंने मैथ सिर्फ फ्लंक किया था. बीच में एक दफ़ा ओ लेवल में मेरा ग्रेड अच्छा आ गया था somehow by a miracle, but generally मैं मैथ में बहुत बुरा था. एंड अ पर्सन जो मैथ में बुरा है एंडिंग अप डूइंग एन इकॉन डिग्री वाज probably the worst decision one could take, but मुझे पता नहीं था. एंड यार क्योंकि आप सोचते हो ना क्योंकि it's economics, so it'll be like economics, right? But you go in there and you get econometrics 101, you're like ये क्या है? Like this is harder than like your ये मतलब regular दिल algebra की is बात going. बोल दी हमजा. आई एम नॉट इवन किडिंग. मतलब आई टर्न अप फर्स्ट ईयर ऐसे तो लाइक हाँ कैलकुलस वगैरह तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं. लाइक व्हाट डू यू मीन? मैथ्स तो मतलब होती ही नहीं है, मुश्किल से बस मैथ रखा था ताकि इकॉन ले पाए. बट ऐसा Were you good at math as a kid? I didn't like it, but I Yeah. was good at it. Yeah, same. Like I had to work very hard to be good at it. Same, Like you it know? wasn't, it didn't come naturally to me. Exactly, and it wasn't enjoyable at all. Yeah. कि रात को बैठ के मैथ्स कर रहे हैं, नहीं मजा आ रहा है बिल्कुल भी. मेरा पता है क्या था, उन्होंने कहा कैलकुलस होती है and it's a very cal focused degree, तो it took me a couple of days to understand कि कैलकुलस होता क्या. But I think by the end of my last semester, एक तो इंतहा की resilience आ गई थी from that setup जिसमें हमें रखा गया था लास्ट में. दूसरा आई थिंक क्रैक कर लिया था मैंने और मेरे जो लेफ्ट राइट दोस्त थे, हमने जो मेरी तरह के ही थे, वी हैड काइंड ऑफ क्रैक्ड इट कि इसका पास कैसे करना है एग्ज़ाम. अगर आपका यू नो एग्ज़ाम में आ रहा है कि एग्रीगेट डिमांड का रिलेशनशिप बताएं ISLM कर्व से कैसे निकलता है, तो आपने लॉजिक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें समझ आ गई थी कि भाई कैसे निकलता है, उसकी फिलॉसफी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ मैथ वो याद कर लो और उसको शो कर दो, आपके मार्क्स आ जाएंगे. So that's how we kind of, me and the people around me, we passed econ. But then you switched from that econ to development, right? Which is, I feel like, is quite interesting. Yeah. Like I even without you telling me, I feel like that was more of a thoughtful decision. कि अच्छा अब मुझे ये करना है. Because development is a subset of economics in a way or the other. Development के courses पढ़े थे. Humanities के जो courses होते थे उनमें मेरा सब में top grade आता था. जो cal focus courses थे उनमें मेरे बुरे marks आते थे. So that was one thing. दूसरी एक मेरी underlying motivation थी for human development, और वो थी so 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में मैसिव लेवल पे एक earthquake आया था, जिसपे आई थिंक पूरा नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान जो था वो डिमोलिश हो गया था, ख़त्म हो गया था. तो मेरी मोटिवेशन वहाँ जाती है. वहाँ से इस तरह जाती है कि 9 अक्टूबर को मेरे घर में ग्राउंड फ्लोर पे रिलीफ कैंप लग गया था. We were as a family collecting relief items from cookies to shelter to quilts and whatnot. तो वो हमने किया कलेक्ट, और उसके बाद एक प्रेसिडेंट सेट हो गया फैमिली में कि जब भी पाकिस्तान में कोई कैलामिटी आती थी, कोई नेचुरल डिजास्टर आता था, कोई वॉर होती थी, तो we'd be there, we'd be setting up relief camps, we'd be doing work on rehab, relief, rescue and all that. तो वो very early in my childhood ना वो एक embed हो गया था मेरे में कि this is something noble that we as a privileged family need to do. और एक 10-12 साल के बच्चे को जब अब एक इस तरह का एक्सपोजर मिल जाए और कॉन्टिन्यूसली, पाकिस्तान में क्राइसिस भी कम नहीं आते, तो कॉन्टिन्यूसली जब वो आते I रहे. don't know what a normal times in we were always in a crisis. बिल्कुल. But no, this one was quite because I remember back in 2005. earthquake आया, फिर आपका फ्लड आया, फिर उसके बाद
there And also was during the war in Fatah, there was there quite a was a bit of war in displacement. Fatah Yeah. Swat. उसमें you know displaced persons से काफी ज़्यादा तो yeah हर crisis में we kind of worked Mm. did our little effort towards the relief and rehab. तो वो embedded था बचपन से Mm. और it kind of made sense कि यार अगर ये तुम as a volunteer कर रहे हो तो why not pursue this as a profession? Mm. Why not take it up as a career? You know, like a lot of people, I feel like don't make that connection. तो लोगों को लगता है कि जो चीज़ like what you're doing like volunteering for that you can't really make a career out of it or you're like sort of spoil it or something like Yeah. that, right? But I think that's very interesting that you actually thought that okay, if I'm doing good I can actually make a career out of it. It's not just a volunteering effort that I need to do. और इन्फ्लुएंस भी बड़ा था हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान में. यू वुड नो you know Edie was like a big philanthropist who would Yeah. do his fundraising in schools. Imran Khan in his philanthropy was doing great work. Yeah. तो वो बस I don't know होता तो काफी मैथ लेवल पे था but I thought that it would be a good career Yeah. to go for. Again डेवलपमेंट में भी जो मैंने की डिग्री तो वो उस पॉइंट पे ज़्यादा कुछ था नहीं करने को बैचलर्स करते ही. Yeah. इट वाज ईदर गेट अ कॉर्पोरेट जॉब और देन get a master's degree. Yeah. So just to kill that time I got into this Yeah. development degree in Yeah. the same university. Yeah. और उस डिग्री में जाके रियलाइज हुआ कि I can actually make a career out of this because आधे से ज़्यादा जो स्किल्स आपको वो सिखाते हैं वो मेरे पास ऑलरेडी थे बिकॉज ऑफ माई पास्ट वॉलंटियरिंग एफर्ट्स. फंड रेजिंग जो था वो मुझे आती थी. नीड असेसमेंट मुझे आती थी कि एक जगह पे अगर कोई मसला हुआ है तो उसको असेस कैसे करनी है उसकी नीड की. फैमिली की क्या नीड्स हो सकती हैं एक ज़लज़ले के बाद. मोबिलाइजिंग volunteer management वो मुझे आती थी. एज अ लिटिल चाइल्ड आई वाज बी डूइंग ऑल दैट स्टफ. So I think that was very, very monumental in me making this decision. Yeah. तो yeah, development पढ़ी, नस्ट से ही पढ़ी. उनका बहुत इन्फेंसी की स्टेज पे था प्रोग्राम. पहला बैच था हमारा डेवलपमेंट का. Yeah, because I feel like in Pakistan typically you don't have such degrees. You don't, yeah. बहुत कम होता है. Like I don't know if it's the case in India though. I'm sure you have it. nahin, India mein there are some good universities that have like postgraduate degrees as well. So there's this university called Jawaharlal Nehru University, which is like it's like the holy grail for people who want to go into these career paths, Okay. like policy, research, development. And generally Delhi University jahan I studied are like by the time we reached third year econ mein hi इतना ज़्यादा डेव का इन्फ्लुएंस था इन आवर कोर्स वर्क एंड इट वाज ऑल कंपल्सरी कोर्स वर्क. लाइक वी हैड सो मच like subjects to do with development, like projects that we had to do in dev. And essentially like Delhi University like माना जाता है if you're doing econ it's sort of like doing a liberal arts kind of a course क्योंकि and also JNU is very liberal arts JNU focused. is like DU 2.0. It's like आपको पता है कि आपको यही करना है. You want to do like a No, but I career think in this. one thing we're lacking in Pakistan is good liberal arts universities. We don't have much of that. Like I think in Pakistan you have a lot of people going into law. You have a lot of people going, well, not a lot, but a bit going into engineering, and then the rest study business. But actually a college that is just liberal arts focused, जहाँ पे कोई sociology पढ़ने जा रहा है या philosophy पढ़ने जा रहा है, we don't have much of that. There's one in Karachi called Habib University that recently opened up, but we don't have a lot of that. It's scarce though in India. मतलब if you look at the numbers, ऐसा a very small subset of students actually get to study these courses because they qualify. Government colleges हैं ये सारे because they qualify like because of their marks. तो बहुत छोटा subset है and it's very like I feel very fortunate having done that. बट वही नॉर्मल रिकोर्स यही है कि लेट्स से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो बट आपने आइडेंटिफाई किया कि यू लाइक डेव एट सम पॉइंट इन योर 4-year डिग्री. The normal recourse is to like apply for a master's abroad or elsewhere in India to study development and then like make a career out of it. तो वही normal path होता है वहाँ.
Then it's a good segue into what I wanted to get into next around the going abroad part. So you also did a master's here at Cardiff. But what I really want to talk about actually is the Chevening Scholarship, Yes. which is, as I understand, I didn't know much about it, so I actually did a bit of research before coming. And I was like, Starting okay, with the pronunciation. starting with the pronunciation. Yeah, we messed it up. मैंने कहा, ये है क्या? I And- mess it up every time. but so it's a scholarship by the Foreign Office in the UK, and it is extremely very, very hard to get, right? So how did that come about? How did you decide that you actually want to go for the scholarship? And then I think what people would love to know, and what I would love to know, is how you actually went about applying for it. Before you start, Hamza is like Sharma ji ka beta, which is a term we used Yeah. to say like overachieving kids who study with you, जिन्हें life में मतलब सब कुछ ही ये जो scholarship एक बंदे को मिलती है, it's like Hamza, I'm the person, you should hire me. Buddy, you're वैसा. the same. Okay. No. You also got a scholarship, so okay. No, but like you highlighted, Yeah. getting something from the government is Yeah, a separate yeah. thing altogether, Yeah. and like that would be super interesting to know कि scholarships एक तो university की तरफ से होती है, which is like tuition waiver मिल गया. or Especially stuff this like that. country, it's so hard to get a visa for this I country. know, right? Hamza, how Getting did a you crack scholarship it? is a different ball game. I think Chevening scholarship जो थी, it's development sector के जो professionals होते हैं उनके लिए बहुत एक go to होता है कि आपने कोई भी डिग्री कर ली है, डेवलपमेंट में थोड़ा सा काम कर लिया तो you kind of apply for the scholarship. बहुत massive discrepancy थी मेरी जो डिग्रीज मैंने की थी उसमें realize होता था जाके जब so right before the Chevening scholarship and right between my first masters, I did a job with the WWF, the World Wide Fund for Nature, Yeah. World Wildlife Fund. तो उसमें छोटी सी मैं थोड़ी सी देर जॉब की थी. उसमें जाके रियलाइज हुआ कि यार सीन बहुत बैड है. टेक्निकल नॉलेज भी नहीं इम्पार्ट की जो एक डिग्री का काम होता है करना. कोई स्किल पे भी नहीं फोकस कराया, कोई रिसर्च भी नहीं हुई. Because again, I wouldn't blame the degree as such, but it was the first batch and it was a program जो कि अभी भी शुरू हुआ था, तो we were kind of the folks जिन पे Yeah. guinea pigs थे, उन पे Yeah. experimentation हो रही थी. तो प्लस ये था कि बाहर आने का मूड था, बाहर की डिग्री लेने का मूड था कि यहाँ से कुछ सीख लें थोड़ा सा मजीद. राइटिंग का शुरू से शौक था, पब्लिक स्पीकिंग का शुरू से शौक था. बीच में मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोचिंग भी की, तो आई थॉट दैट आई गॉट दैट. तो चीवनिंग का ये होता है कि यू नीड 2 years of work experience, Okay. जो मेरे पास as such नहीं था. But that public speaking coaching gig that I'd used to do in different schools in Islamabad, that kind of aided me in fulfilling that criteria. और फिर ये था कि it kind of involved insane amounts of research, some guidance by some alumni. और जो मेन आई थिंक चीज़ थी जो मैंने सीखी, विच वॉज अ टेक अवे फ्रॉम मी फॉर मी इन दिस फ्रॉम दिस एंटायर चीवनिंग जर्नी वॉज कि देर इज़ नो यू नीड टू वर्क हार्ड. जो प्लानिंग फेज होता है ना, उस पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है. यू नीड टू डू योर रिसर्च, यू नीड टू सी दैट what is Chevening at the end of the day. What is Chevening? It's a foreign policy tool that the UK government uses to promote a softer image of their country. End of the day, जब एक बंदे पे आप उसकी ट्यूशन फी कवर कर रहे हो, उसका लिविंग स्टाइपेंड कर रहे हो, उसको एडिशनल घूमने फिरने के पैसे दे रहे हो, तो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं. वो जाके 4 बंदों में और बात करेगा, and he will eventually become an ambassador of the UK when in their own country when they go back. तो बस मोटिवेशन उसकी यही थी कि कुछ लर्निंग की जाए, कुछ जो ज़िंदगी में किया है प्रीवियसली उसको किसी जगह लगाया जाए, कुछ प्रॉपरली अचीव किया जाए, जो कि अचीवमेंट कोई ऐसा अभी तक नहीं थी एकेडमिकली और प्रोफेशनली भी. द रेफरेंस आई टू गिव. So yeah, applied, used my writing ability जो कि develop हुई थी over the past couple of years, leveraged on my public speaking experience, and बस
इंटरव्यू कॉल आई और इंटरव्यू भी अच्छा हुआ और इंटरव्यू में मैंने उन्होंने कहा क्यों जाना चाहते हो, मैंने कहा वर्ल्ड कप हो रहा है, क्रिकेट फ़ैन हूँ, वर्ल्ड कप देखना है। वैसे जेब नहीं अलाउ करती, दे थॉट ऑफ इट एज अ जोक दैटली। और फिर इवेंचुअली मिल गई स्कॉलरशिप। काफ़ी ड्रामेटिक था वो भी, बिकॉज शुरू में उन्होंने मुझे वेट लिस्ट कर दिया जो पहला डिसीजंस आए, and I think I was probably one of the last people in the world to get notified कि भाई आपको final हो गया. So I found out 25 days before my classes were supposed to Oh start. wow, that late. उसमें फिर आपका visa issues भी आ जाते हैं, सारा Right, कुछ होता right, है, but right. then the UK government was like we'll facilitate all of that. Right. उसमें आपको You know, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. as you were saying this and you were talking about the public speaking coaching thing, there's a very cool incident that I just remembered. I have a friend from my university, from HEC. He's much younger than our age group, but I was looking at my Instagram or something. He said, "Yaar, tu Hamza ko kaise janta?" And I was like, "Hamza is a good friend." He went to Beacon House, and you were doing this public speaking coaching thing. He was like, "यार, ये एक Oh बंदा debates करता wow. था, और मैं इसके घर जाता था, ये हमें सिखाता था public speaking." I was like, I just remembered. So वो स्टोरी ये हुई थी कि वो स्टोरी ये थी कि वो हमने शुरू किया एक बूट कैंप Right. पब्लिक स्पीकिंग का छोटे बच्चों के लिए। और एक मेरा दोस्त था, तो वो जब आप स्कूल लेवल पे होते हो तो पॉलिटिक्स भी आपकी स्कूल लेवल पॉलिटिक्स होती है, और यू टेक दोज वेरी सीरियसली। हमने कहा भाई हम जो है ना रेवोल्यूशन लाएंगे। तो किसी दोस्त को कोई स्टूडेंट काउंसिल में कोई पोजीशन नहीं मिली, हमने कहा भाई ऐसी की तैसी इनकी हम देखते हैं। तो हमने एक ऑल्टरनेट स्टूडेंट रन सोसाइटी शुरू की, which was called the Islamabad Debating Society. Right. और उसका जो हेड ऑफिस था वो मेरे घर पे था। अच्छा. We kind of registered that and we started coaching lessons. Yeah. तो मेरे घर पे फिर every weekend, juniors would come in and they'd be like, we'd have proper coaching sessions and we'd, invite other people from other schools Yeah. and other institutes. So वो उसको हमने पूरी एसेंस दी थी इस्लामाबाद डिबेटिंग सोसाइटी की, कि वो हर स्कूल पर रजिस्टर हुआ, रजिस्ट्रेशन फीस रखी, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी उसकी। We took that stuff very seriously. Yeah. अब आके हंसी आती है कि कितना टाइम ज़ाया किया उस पर। But yeah, it used to be a very good summer activity for everyone. And honestly, like, it's very profound. You mentioned these two skills that really helped you, writing and public speaking. I feel like those two, whatever people are trying to do, right? In anything, you have to convince other people, typically. जो भी आप चीज़ चाह रहे होते हो, आपको job चाहिए, you need to apply to a particular university or whatever. You're trying to convince someone, right? And you're trying to communicate to someone that, okay, I am the person for whatever this is. And the skills you need are writing and speaking, Yeah. right? And those aren't skills that schools would typically focus on, Yeah. right? मतलब आप क्या ही स्कूल में writing सीख लेते हो, you know how to write an essay, but that's not what writing is. Right? You need to be convincing. Yeah. When you're with your writing and your public speaking. So it's very cool that you mentioned these two skills. And they helped me a lot in my Chevening scholarship. मुझे किसी ने अभी भी कोई मेरे essays पढ़ता है, मेरा भाई भी पढ़ रहा था, तो वो भी मुझे कह रहा था कि यार आप बहुत ही ऊपर से आए हो essays में आपको। तो उसमें मैंने यही शो किया था कि भाई बाकी दुनिया यहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे तुम दो, मुझे I need the scholarship because मैं यहाँ पे और बाकी सारे यहाँ पे। You're selling yourself. Yeah. You're convincing other people is selling yourself. उसमें मेरी starting थी कि I'm the starting में मैंने context ये था कि I'm for sure है कि I will be the Prime Minister of Pakistan one day. Oh wow. उस तरह की करके मैंने sell किया था, जबकि politics से और सबसे बहुत दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। I was reading for the Chevening scholarship. What they're looking for is a future leader. That's how they define. So I mean, you have to convince them, right? Right. Yeah. What they're actually looking for is people who can make an impact in the country. और आपने बस इसी चीज़ पे focus करना होता है for anyone who's aspiring to apply. Yeah. कि दो चीज़ें हैं,
एक चीज़ है कि यूके गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या है आपके रिस्पेक्टिव कंट्री में. For Pakistan, it's mostly peace and development, education, healthcare, climate. और दूसरा चीज़ ये है कि how can you further their foreign policy goals in your particular country once you return. And you have to return for a period You of have to return for 2 years right. after the degree. तो अगर आप उनको इन दो चीज़ों पे कन्विंस कर लेते हो ना, तो आई थिंक यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू गेट द स्कॉलरशिप. इसकी मेन रीज़न ये भी है कि बिजनेस डिग्रीज को कम मिलती है, फाइनेंस वालों को कम मिलती है. उसकी रीज़न ये भी है कि फाइनेंस एंड बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप दे आर नॉट रियली ऑफ इंटरेस्ट टू द यूके गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. वो नहीं उन चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे इस पॉइंट पर. तो वो जिस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी गोल को वो फर्दर करना चाहते हैं. और आई थिंक इट वर्कड आउट फॉर मी इन अ वे बिकॉज एक तो पाकिस्तान में वैसे भी ह्यूमन एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की बहुत ज़रूरत थी, अभी भी है. एक तो दैट वर्कड आउट फॉर मी. और दूसरा ये था कि मैंने जिस टाइम पे अप्लाई किया था तो आई हैड अ जॉब एट दैट पॉइंट. Right. This is with the World Wildlife Fund. Yeah. So I had a job at that point. So they knew कि अच्छा chevening के लिए अगर जा रहा है तो job security इतनी तो होगी कि वापस आके can probably take the job back. He's got a reason to come back as well. Yeah. So, but you went from Islamabad, which is not the most happening city in Pakistan, to Cardiff, which is, I mean, I don't know much about it. Doesn't sound like a very happening city in the UK. It's not happening at all. Yeah. What was that like? So I think आजकल ना बहुत इन्फ्लक्स है पाकिस्तान से लोग immigrate कर रहे हैं बाहर. और one particular route that they take is going for a master's degree, taking a master's degree and then applying for that work visa route. Right. So for all of those, Cardiff is the best city you can be in because it's extremely student friendly and it's very cheap as compared to London in comparison. Yeah. So Cardiff mein, it's a small town, very beautiful, again very green, very much like Islamabad. लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन I think out of a population of 300,000, 80,000 are students Cardiff में. Oh wow. So a third of the population is student population. छोटा सा टाउन है, लेकिन हाँ मेरा एक्सपीरियंस कार्डिफ का अच्छा गुजरा. What's like your most memorable thing that's striking you अभी? एक तो ये था कि मैं हर वीकेंड लंदन आता था बिकॉज मेरे दोस्त थे यहाँ पे. तो दैट यूज्ड टू बी अ रूटीन थिंग कि Okay. come to London, हाँ. if not every weekend then every second weekend to meet up with the friends. दूसरा ये था कि since it's a very small town and no one cares about the other person, तो जो वर्ल्ड कप हो रहा था जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, that was like the ultimate moment for me कि I followed the team. और कार्डिफ में जनरली ये था कि अगर एक टाउन सेंटर में कोई क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट स्टार लाइक वसीम अकरम या शाहीन या बाबर अगर ये फिर रहे हैं, तो no one knows them, no one cares about them. I can't imagine. Except for me. Yeah, because if they're in London, right, तो वो they won't get a chance to be alone, right? मिलते नहीं वो है. कोई बॉन्ड स्ट्रीट घूम रहे होंगे पीछे 10-15 नहीं लोग. घूम सकते ना, नहीं घूम ही नहीं सकते. सकते. तो कार्डिफ में तो वो I remember I was sitting there having coffee at this coffee shop and working on my dissertation, and this guy comes up to me and he's like, भाई मुझे जरा स्पोर्ट्स जॉब बता दो कहाँ पे. And then I see that's Shaheen Afridi. Oh ठीक है, wow. तो वो इस तरह का सीन था उनका. I got to meet with people like Wasim Akram or Ramiz Raja. Got the chance to show them around the town center. तो वो बड़ा एक नॉवल एक्सपीरियंस था मेरे लिए. ज़्यादा मज़ा आया था बल्कि मुझे. So I used to play cricket in Cardiff. तो like county cricket. काउंटी नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल. Okay, काउंटी हाँ. इज लाइक too advanced. यूनिवर्सिटी लेवल पे क्रिकेट खेलता था. तो
इंडियन टीम के नेट्स में मैं गया Hmm. तो आई गॉट टू सी विराट कोहली बैट Oh wow. He's seen God in the flesh. I got to see him bat. I got to see his discipline. मेरा ख्याल है and दिन की that era of Virat Kohli is 2019 वो एक और Oh, era था wow. उसका. Yeah. तो दिन की मेरा ख्याल है वो इंडिया के बॉलर्स को नहीं फेस करता Hmm. बिकॉज वो कहता है कि मैं इनसे प्रॉब्ली सुपेरियर हूँ क्या हूँ Hmm. Oh. एटलीस्ट उस पॉइंट पे वो नहीं करता था आई डोंट वांट टू गेट हेट ऑन दिस बट या he probably plays 500 balls a day. Hmm. He's got this intense discipline. Hmm. सब्जी मेरा ख्याल है वो खाता है बंदा Hmm. उससे मैंने अगर मार्केट में भी कहीं बाहर देखा तो यूड बी प्रॉब्ली हैविंग अ सैलेड और समथिंग Hmm. हमारे बॉयज जो थे वो डोनट्स वगैरह खा रहे होते थे Ah. तो वो काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट लाइफ Yeah. that wasn't the best sight for a cricket fan. But yeah, I think that was probably the highlight of my Cardiff time. और ये था कि it kind of allowed me to save up Hmm. to probably spend my weekends in London. Hmm. Because इतना student friendly town है, massive difference in the Yeah. price levels. Yeah. Right. Um, आपका जो एक नॉर्मल मील लंदन में आता है उसका 1/4 आप कार्डिफ में खा सकते हो Wow. and very close to London as well. I think probably 2 hours on the Yeah. train. Hmm. Was it sort of living either here in Cardiff or in the UK generally that at that point did you think or decide that I actually, even if I do have to go back for 2 years, that I actually want to come back and I want to work abroad and get a job here? नहीं यार उस वक्त तो नहीं सोचा था बिल्कुल Yeah. भी उस टाइम पे the only worry was to score a job in Pakistan Yeah. Hmm. because at that time पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो नीचे आना शुरू हो गई थी there was a massive problems happening multiple economic problems happening job market crash कर रही थी Yeah. तो मेन उस वक्त तो गोल था कि वापस जाया जाए और पाकिस्तान में जाके नौकरी पकड़ जो है Yeah. किसी जगह Hmm. पकड़े Yeah. रहने का दिल चाहता था और वापस जाके रिवर्स कल्चरल शॉक कहेंगे उसको Yeah. Hmm. वो भी लगा था Yeah. कि यार ये मैं किधर आ गया हूँ Yeah. वो I आप think belong करना बंद कर जाते हो. It's and like yeah, exactly. हाँ. A lot of people face that, and especially Yeah. people who move back permanently. yeah. I think for the first 6 to Yeah. 8 months, it's a bit of a Yeah. challenge. Yeah. Just like it Yeah. was adjusting in the UK. But it's you know, like that. like I at least I had this when I moved from Lahore to Paris when I did my masters. Um, I was homesick for a bit, Hmm. but I think maximum it was like 5 days. Yeah. Right. And then there was a point, December mein aap typically वापस आते हो, and I didn't want to go back because I was so attached Hmm. to the friends and the life I had built there. But वो जब आप वापस जाते हो, it's different. Hmm. आते हैं एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं मुझे भी आए थे Hmm. Yeah. बट आई थिंक आई वाज सो बिजी इन दैट परसूट टू गेट अ जॉब Yeah. Yeah. that I couldn't feel it and I kind of felt it quite later. Later, Yeah. huh? और फिर कोविड आ गया Yeah. and then उसके बाद it was all a blur Yeah. for 2 years. Yeah. लेकिन हाँ उस टाइम पे नहीं सोचा था Yeah. कि वापस Yeah. when I was going back तो वो यही था कि यार बस अब पाकिस्तान ही जा रहे हैं Yeah. और वहीं पे रहना है. But then from that mindset, how did you end up like going to the United Nations and working for the environment program? And this is in Cambridge, right? This that is you're based working in Cambridge. Yeah. So it इसकी थोड़ी बैक स्टोरी है. on? Yeah. बैक स्टोरी है कि जब मैं पाकिस्तान गया तो मुझे आई काइंड ऑफ गॉट अ वेरी गुड जॉब Yeah. विद द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. Yeah. तो उधर जो मैंने काम किया दैट काइंड ऑफ बिल्ट द बेसिस फॉर मी टू कम हियर Hmm. एंड देन वर्क फॉर द यूनैप. सो इट्स यूनैप्स उनका उनके साथ कोलैबोरेशन में एक रिसर्च सेंटर है, पॉलिसी रिसर्च सेंटर है. तो इट्स यूनैप WCMC, Yeah. वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, Hmm. जहाँ पे अभी मैं हूँ. Hmm. तो उसका ये था कि अभी भी जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे that's kind of an extension of the work that I used to do in Pakistan. Right. Hmm. I want to talk about the projects, Yeah. but even before that, I just want to know because it's a bit of a
black box. If someone is wanting to apply to something like the United Nations, I think people there's little information out there as Yeah. to how to go about doing that. So it'll be really helpful, I think, for people listening to this to know how you go, how मुझे you जो अभी did भी it. मैं देखता हूँ ना, लोग जो अप्लाई करते हैं, मेरा कोर इवन फॉर Chevening, Yeah. even for this present job at the WCMC, वो यही है कि यार, you need to research Hmm. a lot. You need to research a lot and you have to make sure कि आपका प्रोफाइल के साथ अलाइन कर रहा है जो रिक्वायरमेंट है जॉब की वो. कुछ लोग ज़बरदस्ती की रिक्वायरमेंट वो अलाइनमेंट बना लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो फिर बस्ट हो जाती है इंटरव्यू में. Yeah. तो यू नीड टू मेक श्योर कि इन वन वे और द अदर अलाइनमेंट है और Right. नेचुरल अलाइनमेंट है. Yeah. छोटी सी एग्जांपल दूंगा रिसर्च की, कि रिसर्च करनी कितनी ज़रूरी है, कि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो बंदे ने जिसने जॉब पोस्ट की हुई है वो किस पर्सपेक्टिव से की हुई है, किस माइंडसेट से उसने वो जॉब डिस्क्रिप्शन बैठ के लिखी है, और उसकी क्या कॉन्टेक्स्ट है. Yeah. पाकिस्तान, इंडिया, साउथ सब कॉन्टिनेंट में जब आप बात करते हो पॉलिसी की, तो वो आपके दिमाग में सिर्फ एक पॉलिटिशियन आता है कि जिसने बैठ के पार्लियामेंट में बैठ के पॉलिसी बनाई है. लेकिन जब आप यहाँ पे आके पॉलिसी की बात करते हो तो इट्स वेरी डिफरेंट. देयर आर नेशनल पॉलिसीज, देयर आर सब नेशनल पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज, तो जनरली यू नीड देयर नीड्स टू बी मोर रिसर्च इनटू द जॉब डिस्क्रिप्शंस. जो भी अप्लाई कर रहा है समझना चाहिए, ट्रायंगुलेटेड व्यू रख के फिर अप्लाई करना चाहिए. आई थिंक दैट्स माय कोर टिप फॉर एनीवन हु इज अप्लाइंग. इसके अलावा यही है कि मेकिंग श्योर योर एक्सपीरियंस इज रेलेवेंट, मेकिंग श्योर यू पुट इन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात इस सेक्टर में, डेवलपमेंट और कंजर्वेशन सेक्टर में, ये है कि टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट, कि आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हो. अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आप किसी टीम में थे जिसने एक पेपर लिखा रिसर्च की, तो जब तक आप उस रिसर्च के इम्पैक्ट की बात नहीं करोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर अ जॉब एनीवेयर, बी इट द यूनैप, बी इट एनी अदर इंटरनेशनल NGO. और यहाँ पे तो लोग देख कहते हैं कि अच्छा तुमने एक टूल बनाया है, तुमने एक रिसर्च की है, तो उसका इम्पैक्ट किस तरह हुआ है, वो पॉलिसी में ट्रांसलेट हुई है नहीं हुई, तुमने उसकी एडवोकेसी की है नहीं की, क्या फ़र्क पड़ा उस पर, उस रिसर्च का दुनिया पे. No, I think that is actually very, very good advice. Yeah, And I think both of us have experienced that similar as well. things, of course. But मुझे tool से like याद आया, I remember when I first started applying for tech, which is slightly different from applying for finance or investment banking. A friend of mine who works in tech told me कि pehli screening in a lot of these big companies, the ATS does it, which is the applicant tracking software system. And she actually told me, जैसे LinkedIn पे job posting है and there are words like leadership or impact or sustainability, for example, अगर एक job post हुई है, she's like, as cringe as it sounds, find ways to insert those words into your CV so that you don't get rejected by a freaking software. उसके आगे जाके the quality of your experience comes in and the recruiter will have a look. But just that first round, like, don't let technology work against you and take that extra time to just insert those words into your CV. And she would like get calls like this. And I think what Hamza is saying is it's more around, don't just think from your perspective. Exactly. कि ये देखो ये मैं हूँ, Yeah, right? No, think from the other guy's perspective कि वो, like, what does that person want? मांग क्या रहा है? What does he Exactly. want? And am I that person, or can I actually convince this? How can I actually convince this person that I am that person? Yeah. I think that's very important. और वो दूसरा ये कि बताओ, अगर आपने एक रिसर्च पेपर लिख दिया है, so as long as उस रिसर्च पेपर का यूज नहीं हो रहा ना सही तरह, so that research paper is useless. I mean, उसका कोई यूज नहीं है. Right. How have you used that particular research to make a change in the world? Because end of the day, इस सेक्टर में जो भी आता है वो सिर्फ इस वजह से आता है कि they're probably passionate about making a change in the world. और अगर एक बहुत ही God complex view से देखना है तो saving the world. Yeah. तो
वो बहुत ज़रूरी है to score a job. And I think that's one commonality that I've seen in many applications that I've reviewed. Yeah. ये चीज़ें missing होती हैं, Yeah. which is why people don't make it past the first stage even. Yeah. Yeah. Talking about passion, Yeah. I think that's a nice segue into talking about your passion projects or like general projects that you've had. I know Ali बहुत better जानता है Yeah. Hamza को, so I'll leave you to it. I think we'll come back to a mutual love that Hamza and I have for a particular location in Pakistan. But even before that, I actually want to ask you about the projects that you've done with the World Wildlife Fund or with the United Nations Environment Program. Like any project that you actually really enjoyed or have a very good story about. Yeah. I've got one in my mind that you've told me in the past. World Wildlife में ना I think learning aspect से was a very rewarding job. Yeah. I have जो भी learn किया, जो भी basis बनी मेरी वो वहाँ पे आके बनी. So there was this particular project वो जिसमें I was leading that project और उसमें we were supposed to study the impact of infrastructure development जो कि उस region में बहुत ज़्यादा हो रही है on snow leopards. Okay. So this is in Pakistan. This is in Pakistan. Okay. The north of Pakistan में फिर हम काफ़ी extensive field work किया. You know पहाड़ों पे जाके मैप किया स्नो लेपर्ड की जो पूरी रेंज होती है उसको कुछ देखने को भी मिले. Helped some people film the snow leopards as well. तो एक बड़ा मज़े का वो काम था और it felt more rewarding at that point because एक तो that particular area is extremely rich in wildlife and biodiversity. Knowledge लोगों को ज़्यादा नहीं है और रिवॉर्डिंग ये था कि इसलिए एक और रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में itself सिर्फ 200 से 300 स्नो लेपर्ड्स हैं. Okay. और अगर आप उसको देखें उसको इवन उसकी पिक्चर्स देखें तो मेरा नहीं ख्याल उससे ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा रीगल और रॉयल जानवर कोई है दुनिया में. I saw one recently in Naltar, and you were the one who told me about this absolutely beautiful animal. Yeah. तो वो तुम्हारे आईफोन की खराब फोटोग्राफी में भी इतना अच्छा लग रहा था इंस्टाग्राम पे. People love my photography. Come what on. you're I think talking that was about. really good photography. Yeah. Man. I wouldn't say You know, kharab. literally to go to that place, I spent 5 hours doing a photography course because I was like, I am going to do justice to the beauty of You this did place. justice to it. Yeah. तो I think वो जो पूरा research project मेरा था जिसमें field research भी थी, desk research भी थी, सारा कुछ था. तो उस पे it did raise some eyebrows from the government's end because उनको था कि यार हम सड़क बना रहे हैं और ये हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं. But to be able to contribute to saving a species which is so beautiful, which is so royal and regal. So that was wonderful. That was a great experience. So WWF में time जैसा भी गुजरा बहुत अच्छा time गुजरा लेकिन extensive learning. जो भी मेरी learning हुई जो मेरी foundation set हुई career की वहाँ पे बहुत मजा आया. What about because you've done some work in Africa as well. I think you went to Ghana. Yeah. At one. What was that for? So Ghana में गया था to build the capacity of their government. Africa में mostly ये है कि resources हैं, natural resources हैं, सारा कुछ है लेकिन political will भी अब आ गई है. लेकिन उनकी capacity नहीं है government की उनकी जो state agencies हैं उनके they don't have that thing in them where they can go on and implement a project or talk about these issues. तो मैं उसके लिए गया था और अच्छा मज़े का ट्रिप रहा. Changed my perspective about Africa at large and generally जो एक thought process होता है बंदे का who's never been to Africa कि किस तरह का होगा. That completely changed. It is just like any other city in India and Pakistan. It's very developed. People लोगों का sense of humor थोड़ा messed up है.
लेकिन you know वो भी I think evolve कर जाएगा. But you were also deep in the jungle at one point in So over there. वो जो था वो काम से related ज़्यादा नहीं था. Hmm. वो ज़्यादा जो था मैं गया था more of a Passion. passion, more of passion a thing. to Yeah. ट्रिप कर लें. Yeah. नेशनल पार्क अफ्रीका Yeah. आए भी हुए हैं. Hmm. गाना को बेसिकली कहते हैं it's गाना इज अफ्रीका फॉर डमीज Hmm. Oh. बिकॉज वहाँ पे लिमिटेड वाइल्ड लाइफ है. Yeah. वहाँ पे जरा लोग थोड़े से ज़्यादा तमीज़दार हैं. Yeah. Okay. इतने नहीं हैं लेकिन हाँ. सो या वो अच्छा मज़े का ट्रिप गया. वो वी काइंड ऑफ ब्रीच्ड इनटू सम अननोन टेरिटरी. What जब do you mean? मैं गया हुआ था उधर विजिट पे गया हुआ था सफारी पे. तो वो बुश ट्राइब थी. हम उसकी टेरिटरी में घुस गए. Oh wow. फिर उन्होंने हमारा पीछा किया. हम आगे थे वो पीछे थे. पीछा क्यों कर रहे थे? हाँ. पीछा like why were they chasing you? But they wanted to drive us out, or probably later Oh. found out that they probably wanted to make a dish out of us. Have you for dinner? Oh, they're Have us for dinner. cannibals. Yeah, this is cannibal वो tribes. cannibal Oh. tribe थी. लेकिन हाँ इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. जब हम उधर से दूर भाग रहे थे तो फ्लैश करी थी जिंदगी पूरी सामने. Oh my god. और एक बड़ा वियर्ड ट्रेड ऑफ था दिमाग में कि जो पीछे आपके आ रहे हैं इनका डिनर बनना है या अगर सामने से शेर आ गया तो उसका डिनर बनना है. तो वो एक क्या बहुत चॉइस थी हमजा? क्या सोचा आपने? क्या बनना I चाहेंगे? thought the share would have been a better story to tell Like people. mightier way to die. Yeah. Yeah, Yeah, I a better agree. story to tell I people. agree. अगर कल को मेरी जगह अली आता पॉडकास्ट पे तो it would have been a more honorable way to die, and Ali could have said that I had a I had a friend, friend who got eaten by a lion yeah. instead of Yeah, मेरे को तो लगता है got eaten by cannibals is like Cannibal a one in a is more million. interesting. We'll probably get यार वो more पता नहीं ना views. कैसे खाएंगे. वो क्या बनाएंगे भी या नहीं बनाएंगे. ऐसे ही शुरू हो जाएंगे. तो वो क्या करेंगे वो नहीं पता. Yeah. तो खैर वो था इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है गाना का भी. Yeah. मेरी जो इस इंसिडेंट के अलावा भी मेरा जो परसेप्शन था अफ्रीका का वो बहुत चेंज हुआ. Yeah. there's a lot of similarities between Pakistan, India, Ghana. One of them, and even all of Africa, one of them is कि corruption बहुत intense है सब उस जगह पे. पाकिस्तान में जो corruption होती है एयरपोर्ट पे if you're held up, Yeah. तो the person would put you in a situation कि आप उसको पैसे दो. Yeah. Yeah. यहाँ पे वो डायरेक्ट मांगते हैं कि यार हाँ. निकाल पैसे. अच्छा, in पैसे Ghana, दो. in Africa. Yeah. Yeah. And then they'd be like अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो हम ये करेंगे तुम्हारे साथ. बता के करते हैं. Yeah, but the overall development, I think, is quite. They've done a lot of work around that. One of my friends was in Nairobi recently, in Kenya, and he was like, "This city was more developed than Lahore." Like like you're saying, it changed his view of Africa as well. मैं गया था Accra, which is the capital of Ghana. Yeah. और it's definitely as developed as Lahore, if not more. Yeah. उनको पता है कि हमने किन चीज़ों को ठीक रखना है किन चीज़ों को नहीं रखना. Yeah. तो putting aside the local sense of humor, Yeah. बाकी सब कुछ काफ़ी डेवलप्ड है. Yeah. और एक जो परसेप्शन होती है आपकी कि भाई अफ्रीका है probably Sahara desert and that's it. Yeah. वो completely change हुई थी. I'm just realizing we're short on time, but there's one thing I do want to cover, and which is as I said, a mutual love that Hamza and I have for the Hunza Valley in Pakistan. I went recently, as you know, and Hamza designed my entire itinerary. And when He's I come back went a changed there, man, I've if I come. may say. I've come. It's honestly, that place is out of this world. There's places while you're going to Hunza, and Hamza was telling me about. Like, there's a place called Chalas. I was driving through and I was like, I'm in Mars. It is out of the world. It is out of this world. It's Yeah. very beautiful, very Yeah. profound, and the people there. It's got a 98% literacy rate, the highest in Wow. Pakistan. The resort I was staying in, one of the people working at the restaurant, he was a master's in hospitality, and the Wow. guy was going to China to do his PhD in 3 months. And you have done projects over there, sustainability projects in a personal capacity. I think like
people would love to know what those were. So the love with Hunza and mountains goes long, way back. तो उस पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन yes, if there's one place in the world that I can pick out, that's Yeah. Hunza. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं. और I think my job at WWF kind of paved that way for me to work in Hunza, to at times live in Hunza as well. Yeah. और उसका मेन जो ईज थी टू वर्क इन दैट रीजन, वो ये थी कि हुंजा इटसेल्फ में और इस पूरे रीजन में विच इज़ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो लोकल गवर्नेंस सिस्टम है, दैट्स वेरी डिफाइंड, दैट्स वेरी वेल डिफाइंड. आपका एट अ विलेज लेवल काउंसिल्स बनी हुई हैं, दे हैव प्रॉपर फंडिंग फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, दे हैव अ फंडिंग मैकेनिज्म, दे नो कि जो फंडिंग है, जो फाइनेंसेस हैं, उसका हमने कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, Right. कैसे यूटिलाइज करना है. So that's something that kind of catalyzes the entire thing. कुछ थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स मैंने किए, एक ग्रांट मुझे मिली, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया हुंजा में, जिसमें ये था कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रमोट किया कम्युनिटीज़ के साथ, लोकल कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हुए. अगर आप 300 बंदा एक पहाड़ के टॉप पे रह रहा है एंड द women need to go climb down the mountain to get water from the river every day. So kind of designed a mechanism के climate resilient technology के थ्रू वो पानी पहाड़ के टॉप पे ही रहते हुए पुल कर लें ऊपर. Oh wow. So कुछ इस तरह की इंटरवेंशंस की वहाँ पे. लोकल कम्युनिटीज के साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के, आपके पास अगर एक पूरा ऑर्चर्ड है चेरीज का और एप्पल्स का, तो हाउ कैन यू मेक मनी आउट ऑफ दैट, हाउ कैन यू यूज टेक टू काइंड ऑफ मार्केट योर प्रोडक्ट्स जो आपके घर में उग रही हैं. इको टूरिज्म पे भी काम किया. द रिजॉर्ट दैट यू आर मेंशनिंग, उनके साथ जो था, उनकी सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट की. दैट्स प्रॉब्ली आई थिंक द ओनली सस्टेनेबल tourism facility in the entire region. Yeah. What I loved about it, by the way, is everything inside the resort was local. And it's all sustainable. It's all there was a even the tables in the rooms, the wood and everything is from Hunza, and it's the local carpenter who's Oh done wow. it. Yeah. I think it was you who was telling me that there's जो dustbins बनी हुई है लकड़ी की, there's some blind man in the Yeah. Karimabad Bazaar who Yeah. does the dustbins for them. Everything at that facility is sustainable, ranging from the construction. Salvaged wood है, beh gaya tha दरख्त in floods. Yeah. So they kind of bought the Oh, wood. wow. So instead of cutting another tree, bought they're the using tree, they okay. utilize wood from Yeah. there. Oh wow. The supply chain is sustainable. Yeah. तो उस resort पे भी जो था वो, it's like they need more resorts, Yeah. such facilities there, because outside the polar regions, apart from outside the north and the south pole, this place has the most glaciers in the world. Oh really? Yeah. There are Oh, I around had 7 no to idea. 8,000 glaciers in total in that particular proximity of less Oh than wow. 1,000 square kilometers. और जो climate change है उसका सबसे ज़्यादा impact उन लोगों पे हो रहा है, because गर्मी वहाँ पे ज़्यादा accelerated impact है. Right. ग्लेशियर पिघलेगा तो फिर eventually it's Right. gonna wreak havoc for them. मैं वहाँ लोकल से जब बात कर रहा था, they would tell me, okay, ये ग्लेशियर अभी पहले यहाँ तक होता था, अब यहाँ चला गया. And Oh, those that's so people sad. are seeing climate change from their very eyes. It's happening right in front of them. And the extent of awareness that they have. Yeah. एक बाजार में अगर आपको छोटा बच्चा भी मिलेगा ना, स्कूल गोइंग, Yeah. so he knows के climate change के क्या impacts and what to do Yeah. to counter those. हम Yeah. लोग जो है वो 3 साल लगा देते हैं डिग्रीज करने में to Yeah. know what the technical aspect of it is. Yeah. लेकिन एक छोटा सा बच्चा जो है वो he would have that knowledge. Because they're affected by it directly as well. They no? are. Yeah. लेकिन जो सबसे ज़बरदस्त बात है ना उस एरिया की, that you even mentioned, Yeah. is the fact कि उनकी ना they have respect and value for labor. Yeah. एक PhD in physics होगा बंदा जिसका thesis probably बहुत
quantum physics पे होगा, लेकिन Yeah. end of the day he's working in his field, he's harvesting potatoes, Yeah. and he's running this little household or this regional economy, and he's contributing to that, and he's feeling no shame in doing that, Yeah. which is so much different from if you compare it with the urban centers in Pakistan, Yeah. जहाँ पे probably एक बंदा जो आलू उगा रहा है तो उसको उस तरह नहीं देखा जाएगा, और he's Yeah. probably Yeah. very Yeah. low in the social Yeah. cycle. Yeah. Wow, that's so interesting and satisfying. I think before we wrap up, Hamza, the last question I want to ask is, you've done so much in your career which is uncharted territories. ऐसे precedent नहीं था, मतलब अगर मैं बोलूँ बैंकिंग का प्रेसिडेंट या सेट पाथ नहीं होता है तो वर्किंग इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस इज लाइक अनदर बॉल गेम ऑल टुगेदर. Yeah, I mean, if you think about it, who do we know who works for the UN? I I just know know. Hamza. I probably like at some point I know one or two people, but Yeah. I don't know many people Yeah. like that. So at a cellular level, at like a mindset level, what does it take to chart a path without precedents, and how have you like kept your optimism alive all through your entire career? वही जो मैंने पहले बात की थी, आई थिंक फॉलोइंग द पैशन. एक जब पैशन आपका होता है तो देन यू नो व्हाट द डेस्टिनेशन इज, यू नो व्हाट द फाइनल गोल इज, तो वो आपको होता है, तो फिर ये आपने बस जर्नी गुजारनी होती है. that's how easy it sounds. लेकिन हाँ, आई थिंक to have a smooth journey, need to be very prepared. You need to do a lot of research. You need to do a lot of hard work. Need to prepare yourself for the ups and the downs. Yeah. Need to have a good set of advisors and friends, and people praying for you. So I'm lucky to have those. So ये combine एक formula है Yeah. जो बस किस तरह mathematically चल जाता है, किस Yeah. तरह काम कर जाता है. That's like, again, precedence नहीं है, कोई fixed path नहीं है, लेकिन बस चल जाता है. But I think these are the core elements Yeah. that kind of contribute to that destination. I think that was an amazing note to Yeah. to wrap this up. Thanks a lot, Hamza. Like, it was like very, 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 very fun having you. Yeah, Uh, same. Pleasure Thank being you here. so much. Thanks for Thank you taking so out the much. time. Thanks for having me.